We'll continue with the topic projections of solids. Now, what we have studied up till now, listen. In three-stage problems, which are the three stages? First, we draw true shape of base view, then true length of axis view. This is first pair, true shape of base, true length of axis view. Then we rotate true length of axis view, the view in which true length of axis is visible. That view we rotate first. We rotate true length of axis view, and then we get horizontally compressed base view. Here the base gets compressed horizontally. No vertical distortion in the base, horizontal it is. So we rotate this horizontally compressed base view. So third stage is rotated horizontally compressed base view and the final view. In this order we complete the drawing, remember always. But sometimes we draw true shape of base above XY line. Now in first angle method of projection, below XY line means in HP and above XY line means in VP. Below XY line it is HP, above XY line is VP. While rotating front view, remember, we rotate front view first and then we rotate top view. It depends. Sometimes we rotate top view first and then front view. Remember in this manner that true length of axis view is to be rotated first. Okay. So if we draw true shape of base above XY line, then this is how we continue. This is the flow chart. True shape of base view, then true length of axis view. First rotation is true length of axis view. We get horizontally compressed base view, and then we rotate horizontally compressed base view and we get final view. This is how we complete drawing in three stages. While rotating top view, now here we are first rotation is rotation of top view. Remember, below XY line it's top view, and in this case first rotation is of front view. But what is very important to remember is while rotating front view, take care of details with HP, and while rotating top view, take care of details with VP. Now, how to decide where true shape of base is to be drawn? Remember, first check, clearly I mentioned here, true shape in HP. Draw it below XY line. In HP means below XY line. If face inclination with HP is given, if top view shape of a surface is given, if base edge in HP or parallel to HP given and resting on HP, and draw true shape in VP if face inclination with VP is given or front view shape of a surface is given, base edge in VP or parallel to VP given or resting on VP it is mentioned. But I've told you that these are 4 points I've given you: face inclination, top view shape, base edge in or parallel HP and resting on HP are in order of their importance. So to take decision where true shape of base is to be drawn, what you are going to do, check first of all where face inclination with HP given or with VP is given. If nothing about face inclination mentioned, a face inclination means face parallel to HP, face vertical, face in HP, wo bhi aa gaya. So check whether face inclination is given. If nothing about face inclination given, then check whether top view or front view shape of any surface is given. If it is not, then check whether base edge in HP or parallel to HP. Base edge की बात हो रही है, not face edge. Base edge in HP or parallel to HP. And if it is not, then simply check whether object is resting on HP or resting on VP. Resting on HP means some one of the features of the object. Features in the sense base, corner, apex, face edge, face, base, etc. One of the features of the object is in contact with HP, so हम कहते हैं resting on HP, and if it is in contact with VP, we say it's resting on VP. So this is very important table which helps you to decide where true shape of base is to be drawn in HP or in VP. That is the most important decision you will have to take, and then orientation of true shape of base. So only two possibilities, as I told you, that triangular prism, square prism or pyramid, pentagonal prism or pyramid, hexagonal pyramid or prism. So these are the two shapes of different prisms I've given you. These are the shapes involved in syllabus. So if it is triangular pyramid or prism, you will draw triangular base in this manner or in this manner. But how to take that decision? So I've told you that what is similarity in the left column, edge is vertical and the true shape of base is completed. And edge is vertical and true shape of base completed on the left side of the base edge. The vertical base edge के left side पे वो true shape complete किया.
मतलब on the right side that vertical base edges, and here on the right side we have managed corners. Check here. And that too, these corners are managed symmetrically, symmetrical about horizontal line. Check. Now, how to take decision where true shape of, how in the sense, in what orientation true shape of base to be drawn. So clearly, if face inclination is mentioned with reference place means with HP or VP, तो फिर ऐसे ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करोगे, स्क्वायर ऐसे ड्रॉ करोगे, पेंटागन ऐसे ड्रॉ करोगे. If base edge in or parallel to the reference plane given, base edge in or parallel to reference plane given, then this is how you will draw those true shapes according to the shape of the object. And if it is resting on corner, a corner is in HP, then you will draw it in this manner. Now I want you to take photograph of this slide. And when you solve problems on projections of solids, keep it in front of you. Or when you read a problem from books, solved problem, जब आप actual draw नहीं कर रहे हो, सिर्फ read कर रहे हो from books, in that case also keep it in front of you. और आपको जो भी doubt है, you will able to solve about initial stage will get solved using this slide. Okay, let's continue solving problems. Read this problem. A pentagonal pyramid, base edge is 30 mm long, face edge is 60 mm long, has one of its base edges in HB. आगे जाना ही नहीं है. As I told you, each and every statement gives you certain information, write it. But when you write information, write it in parts in this manner. Size and shape of the object. This is pentagonal pyramid, means that three-dimensional shape. And length of base edge is 30, face edge is 60. That is the first statement. It has one of its base edges in the HP. So one base edge in HP. And inclined to the VP by 60 degrees. Matlab it's the same base edge is inclined to VP by 60 degrees. That I am going to write it here with VP. The face edge opposite to the edge in HP. एक base edge in HP है ना. Face edge opposite to the base edge in is parallel to HP. Base edge is not parallel to HP. A face edge which is opposite to this edge is a parallel to HP. Draw projections of the pyramid if its apex is towards the observer. Apex is towards observer. So apex is towards observer means away from VP. And away from observer means towards VP. Remember this. And this phi is a true inclination of a line with VP. उसे हम ये नोटेशन यूज करते हैं phi. So यहाँ पे लिखा है देखो clearly, and you should understand whether it is true inclination given or top view inclination given or front view inclination given. So read problem very carefully. यहाँ पे clearly mentioned this pyramid has one of its base edges in the HP. So one base edge in HP and the same edge and incline. It is in this statement it is information about this base edge in HP and inclined to VP by 60 degrees. So remember the edge is inclined to VP by 60 degrees. This edge is inclined to VP by 60 degrees, not its top view or front view inclined. So edge is inclined to VP, इसलिए it is true inclination. That is why I've used notation phi. But of course there are many edges, so it is true inclination of edge which is in HP. एक base edge HP में है ना, उसका true inclination with VP, because in this sheet I've mentioned details with respect to VP. Okay, now let's start solving the problem. What do you mean by that? तो पहले true shape of base, तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड पे ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस मिलेगा. बट ट्रू शेप ऑफ बेस कहां पे ड्रॉ करेंगे, मतलब अबव एक्स वाला लाइन और बिलो एक्स वाला लाइन, वो डिसीजन आपको लेना है. एंड ओरिएंटेशन, सो हाउ टू टेक दैट डिसीजन. Check whether face inclination is given. Is there anywhere face inclination is given? No, this is not face, it is a face edge. Surface and surface की edge, इसमें फर्क करना हमेशा. Remember, it is not about face, but it is about face edge information. So nothing about face is mentioned. Okay, then top view या front view shape. Second point check कर रहा हूँ. Top view shape or front view shape of a surface is given? No. Then base edge in HP और parallel to HP लिखा है. Listen, base edge in HP लिखा है. Base edge की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक face edge भी parallel to HP है, लेकिन no, we have taken decision from this information. Base edge in HP लिखा है.
So that suggested you to draw true shape in HP. So first decision, true shape of base HP में draw करना है. Now how to draw true shape? पेंटागन है, पेंटागनल पिरामिड है, तो पेंटागन ऐसे ड्रॉ करेंगे या ऐसे. तो चेक हियर, बेस एज इन HP है. अब इन द रेफरेंस प्लेन ऐसे मेंशन किया. इफ बेस एज इन HP दिया तो वी शुड ड्रॉ पेंटागन इन दिस मैनर. सो ऐसे पेंटागन ड्रॉ करना है. मतलब क्या है कि एक वर्टिकल एज ड्रॉ करेंगे एंड कंप्लीट पेंटागन उस वर्टिकल एज के लेफ्ट साइड पे आना चाहिए. दिस इज हाउ विल मैनेज दैट पेंटागन. सो लेट्स कंप्लीट. सो एज यूजुअल, don't draw, just try to understand. Logic behind that, you try to understand. So XY line. Then this is how we draw that vertical line. This is the projector. Projector for that edge. And we'll measure that base edge 30 millimeter long. So length of base edge is 30 millimeter. So this is the first edge. Since it is base edge of the object, it should be dark, 30 millimeter long. Then at the two ends, measure 108 degrees. In this manner. Then take distance 30 millimeter in compass, which you have already measured here. So take this distance in compass and complete the pentagon. So this is how we have completed the pentagon. No problem at all. You have practice of drawing pentagons. So it will not take much time. So drawing pentagon is not a problem now. It's position below XY line and this orientation we have drawn the pentagon. To draw pentagon in this way and in this position, what helped us, which is that information helped us, that you should understand. Okay, then it is just a pentagon, not top view of pentagonal pyramid. Pentagonal pyramid ka top view ye tab hoga when in this diagram there will be all 10 edges, matlab 5 base edges and 5 face edges and all 6 corners, 5 base corners and 1 apex. So up we'll label all this. Before that, check here, base corners to be labeled as A, B, C, D, E. And now to mark apex, what I've told you, if you remember, first, since pentagon is symmetrical about a horizontal line, draw its axis of symmetry in this manner. So basic logic hai कि any two corners you should join with midpoint of opposite edge. Is that correct? So when you draw this horizontal axis of symmetry, it automatically passes through the midpoint of horizontal edge. That's not a problem. And now, listen, if you remember last two problems we solved on pentagonal pyramid, I asked you to bisect this line. Extra construction kiya tha to find midpoint, because in those two problems, length of base edges was 25. Here length of base edge is 30. So half of the length is 15 that you can measure using your drawing instrument. So कोई compass का use करना नहीं है, कोई extra construction नहीं करना है, just measure that 15 and you will get the midpoint, join midpoint with opposite corner. And this is how you have found out apex, join apex with all base corners in this manner. Unless you draw a dark line, it will not be counted as an edge. So be sure that you have drawn all 5 face edges. Now label all the base corners in alphabetical order. Check here, A, B, C, D, E and apex with letter O. आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको, इन द सेंस अब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट आसानी से हो जाएगी. देखो क्या करते हैं, ऑल बेस कॉर्नर्स जो है, फ्रॉम ऑल द बेस कॉर्नर्स वी ड्रॉ प्रोजेक्टर्स अप टू द XY line, because in front view all base corners you mark on XY line. It means entire base is in HP. Front view touching XY line means it is in HP. So I'm drawing these projectors. Check here, unnecessarily long projectors, it's wastage of time and possibly it will confuse you. So remember, projectors are up to XY line for base corners, but apex is above the base, so extend that projector. But remember, when if you extend or draw projector from point O, apex is at certain distance, at certain height from base. But when you draw that line, remember, draw projector up to XY line only, and above that you draw axis, because we know that axis is vertical and it is passing through O, point O. Okay. Now, length of face edge is given. If length of axis is given, you should measure vertically.
Now length of face edge is given. Which face edge is showing true length in the front view? तो टॉप व्यू देख के पता चलता है, क्योंकि टॉप व्यू पैरेलल, फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ. सो मैंने टॉप व्यू देखा. इन द टॉप व्यू ओडी, टॉप व्यू ऑफ एज ओडी, इट इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन. मतलब ओडी इज शोइंग ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू. So here it is point D. Check here, B and B dash, A and A dash. So these points are labeled. पहले base dark कर लेना. It's very important. Base, make it dark. That means you have made all 5 base edges dark. Now from D dash, we have identified that top view of edge OD is parallel. मतलब front view of edge OD. Front view of edge OD means O dash D dash is showing true length 60 millimeter. So take 60 millimeters in compass. And from D dash, you cut the axis in this manner and you will get apex. Now join apex with all base corners in the front view. So OA, OB, OA and OB coincide here. Then here OC and OE, and finally OD. Check here, OA, OB, OC, OE and OD. All 5 face edges are there. All 5 base edges are there. And this is how first stage is complete. Now which view is to be rotated first? The view in which true length of axis view. Remember, opposite to true shape of base view, it is always true length of axis. So this is a true length of axis, no doubt about that. We don't know this true length. We don't want to know that true length. तो मेजर करने की जरूरत नहीं है, but it is true length of axis, we know it. So this view is to be rotated. अगर एग्जाम में पूछा गया what is true length of axis, तो measure here that true length and write the answer. Okay, but right now we want to rotate true length of axis view. Now what information we have? So check here, we are rotating front view. While rotating front view, we should take care of all details with respect to HP. So what are the details with respect to HP? A base edge in HP. अब हम देखते हैं कि at boundary of this triangle, base edge boundary पे कहां पर आ रही है. तो check here, this corner. Remember, as I told you, this boundary features are very important. 3 edges and 3 corners है. ये outline shape of pyramid in front view. It's a triangle here. This edge is a face. Which face? OAB. This edge is a face edge. Which face edge? OD. And this line is pentagonal surface at the base. Okay. This corner is apex. This corner is a base corner, and this corner is a base edge. We want one base edge in HP, so we should tilt this pentagon so that only this corner A dash B dash is on XY line. ये है true length of this edge O dash D dash. Okay. Next क्या लिखा है देखो. The face edge opposite to the base edge is parallel to HP. The face edge opposite to the edge in HP is parallel to the HP. The face edge, so which face edge is opposite to the base edge in HP? Base edge in HP is A dash B dash. Which face edge is opposite to the, so this is that face edge. This face edge is opposite to the base edge. But remember, ये जो details यहाँ पे है ना, वो details boundary पे आने चाहिए, वो बहुत important है. इसीलिए boundary के features पे ध्यान देना चाहिए. तो face edge, this is that face edge which is opposite to the base edge in HP. Check here, base edge in HP is AB. ये edge AB HP में वो front view से पता चलता है. Details with respect to HP front view से पता चलता है. And which face edge is exactly opposite to the edge AB? तो ये है OD. Front view में यहाँ पे है O dash D dash. So this edge we want parallel to HP. This edge we want parallel to HP. तो कैसे करेंगे? देखो, ये A dash B dash XY line पे चाहिए, तो ये आ गई one base edge in HP. Now we want this edge parallel to HP, but this edge OD does not contain AB. तो OD edge यहाँ पे parallel to XY line, तो आसानी से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ड्रॉ कहां पे करना है? We drop a perpendicular. Check here. The corner, if you know position of a corner, position of a point, and you want to draw a line at certain angle which does not contain that corner, then
we use a perpendicular to that line. So perpendicular to OD that contains this corner. ऐसी line हम कैसे draw कर सकते हैं? तो this is how you use the protractor. ये 90 डिग्रीज वाली लाइन है, प्रोट्रैक्टर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. आई हैव प्लेस्ड ऑन लाइन ओडी सो दैट watch here from a dash b dash we can draw this perpendicular. This is exact perpendicular line on OD. Exact perpendicular. Now if you want this line parallel to xy line, it's perpendicular, which is I've labeled it as K. This label is not required in drawing. It is just to explain you procedure. I've labeled it. You should label only corners, but try to understand, because OD you want horizontal, मतलब parallel to xy line. You should draw a dash k vertical. So I'll draw a dash k vertical. तो पहले एक vertical line draw कर ले. ये कैसे ड्रॉ करना है अभी आपको मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है. वेरी फर्स्ट वर्टिकल लाइन जो है, सेट प्रोट्रैक्टर सॉरी रोलर विद दैट वर्टिकल लाइन, रोल इट एंड ए डैश बी डैश एक फेंट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना. नाउ टेक दिस डिस्टेंस इन कंपास ए डैश के, क्योंकि हमें यहाँ पे ए डैश के वर्टिकल चाहिए. सो ये कंपास में लिया और यहाँ पे दिस इज हाउ आई एम मार्क पॉइंट के. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर कंप्लीटली. देन फ्रॉम पॉइंट के ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ओ डैश डी डैश. अब ए के वर्टिकल हो गया तो ऑफकोर्स ओ डैश डी डैश हॉरिजॉन्टल होगी, बिकॉज ओ डैश डी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए डैश के. तो ये डिस्टेंस देखो, बी केयरफुल. नाउ सेट रोलर विद एक्स वाई लाइन और एक फेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लेना. नाउ चेक हियर फ्रॉम पॉइंट के टू ओ डैश, टेक दैट डिस्टेंस इन कंपास एंड यहां पे ट्रांसफर कर लेना. ये हो गया ओ डैश. Then take this distance in compass k to d dash, और यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना. And this is how we have drawn that edge o dash d dash. Check here, very first line you draw, that's very important. All details with respect to HP are there in this drawing. A base edge in HP, which base edge in HP? AB. And face edge opposite to that edge AB, which is that face opposite to the edge in HP? OD. And this edge OD is a parallel to HP. All details with respect to HP front view में आएगा, तो front view से पता चल गया हमें कि OD is parallel to HP. Okay. Now you complete this drawing. मतलब क्या है कि ये तो आउटलाइन शेप ट्रायंगल है ना, सो जिसमें O डैश यहाँ पे AB एंड यहाँ पे D, ये तीन कॉर्नर्स है ट्रायंगल के, वो तो तीनों कॉर्नर यहाँ पे जस्ट ज्वाइन कर लेना डार्क लाइन से. नाउ C डैश E डैश, टेक दिस डिस्टेंस, पहले ये है एक्सिस के लिए, ये डिस्टेंस ट्रांसफर किया मैंने. देखो जहां से ये एक्सिस ड्रॉ करेंगे अप टू पॉइंट ओ एंड सी डैश ई डैश ट्रांसफर. देखो डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम ए डैश बी डैश, सो ट्रांसफर इज फ्रॉम ए डैश बी डैश हियर. Label that point C dash and E dash. Now C dash E dash to O dash, that is the edge. These are two edges here coinciding, and from this point ये axis है. So check here, this diagram is now tilted here, and all details with respect to HP on paper. Now opposite side पे drawing complete करना बहुत आसान है. This is how we complete. Check. From each corner you are going to draw projectors this way. Vertical lines. Roller use करना है. Set roller with very first vertical line. Roll it, and from each corner, so 5 base corners and apex. And then set roller with XY line, roll it, and from each corner again, from adjacent top, you draw horizontal lines. This is how. Now trace all the points here in the top view. These points you will get in their respective positions if you have drawn these lines from all corners, all projectors from all corners, and horizontal lines from adjacent top view. आपको हर एक corner in its respective position मिल ही जाएगा, आपको सोचना नहीं है. अभी सोचने का काम हियर इज जब आपने ओ डैश डी डैश ड्रॉ किया. अब आगे मैकेनिकली कंप्लीट होता है. तो ओ ये अपेक्स आ गया, वर्टिकल लाइन थ्रू ओ, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ. देन ए, वर्टिकल लाइन थ्रू ए, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए. सिमिलरली बी, vertical line through B, horizontal line. So this is how all points you will get in their respect. Vertical line through C, horizontal line through C. Here it is point D, here it is point E. So get all 5 base corners and apex.
This is very important. And be sure that you are getting horizontally compressed base, and that to a symmetrical figure about a horizontal line. ये pentagon symmetrical है. And this is horizontally compressed base view. Second stage में हमेशा आपको horizontally compressed base view मिलेगा. That is view of the pentagonal pyramid in which base appears horizontally compressed. Okay. Now from all these base corners, draw lines up to apex. These are face edges. So check AO, BO, CO, DO, and EO. I've drawn it with red color. Of course, you don't have that advantage in exam. You cannot use colors. But check whether there are all lines here. Suppose you have forgotten to mark any single point, then you will not get the correct diagram. So be sure that there are all edges available properly, all corners are available properly, and then how to identify hidden edges, visible edges? Simple. The same thing again and again in each and every problem I'm telling you. So you will understand now. Boundary edges, बगैर कुछ सोचे समझे dark करना, because you never get hidden line at boundary. So draw continuous line at boundary and think about remaining edges. लेकिन कैसे सोचना है? देखो, opposite side पे देखना है. अगर top view ड्रॉ कर रहे हो तो टॉप से देखो and check apex and base. Base in the sense lowest point on the axis, correct? So apex and center of base. Apex and center of base को compare करना है. Check which whether apex is closer to observer or base. तो apex is closer to observer. That means base is hidden. ये one glance is enough. Fraction of a second. मैं second भी नहीं कहता हूं. Just one glance on the opposite side आपको पता चला कि apex towards observer है, मतलब base hidden है. मतलब in the top view remaining base edges hidden draw करना है. So ये देखो, ये remaining base edges hidden draw किए. अब face edges की बारी. There are three face edges, OA, OB and OD. लेकिन आपको पता है कि face edges over hidden base. Base hidden है तो already identify किया हमने. Face edges over hidden base are visible. तो पेंटागन पर सिर्फ एज OD आती है, वो visible है. बाकी these two OB and OA are hidden. This is how we have completed horizontally compressed base view. Now let's proceed. Which view is to be rotated now? Horizontally compressed base view, which is top view here. It is top view here. While rotating top view, we should take care of all details with respect to VP. Top view gives details with respect to VP, and here I mentioned details with respect to VP. Correct? So क्या है? True inclination of edge in HP. Here true inclination of edge in HP. The phi is inclination with VP. Huh? So which edge is in HP? Edge AB. Edge AB is in HP. So this edge we should draw at an angle 60 degrees. Edge AB is at an angle 60 degrees. But remember, why we should use this notation? Remember, this notation reminds us that only true length gives true inclination. तो सवाल ये आता है कि whether edge AB is showing true length here. Remember, this is very important. Edge AB यहाँ पे true length दिखा रही है क्या? तो yes, and in fact only there are 5 base edges. Out of those 5 base edges, only edge AB is showing true length. कैसे पता चलता? तो देखो, एज CD फ्रंट व्यू पैरेलल होगा तो टॉप व्यू ट्रू लेंथ होगा ना. तो एज CD फ्रंट व्यू इज नॉट पैरेलल. किसी भी एज का फ्रंट व्यू पैरेलल नहीं है एक्सेप्ट दिस एज AB. AB एंटायर एज इज इन HP. In HP is, you can say, special case of parallel to HP. Parallel to HP means a line is parallel, but it is at certain distance from HP. When that distance is reduced to 0, it will be in HP. So entire edge AB is in HP. Otherwise, watch here, there is horizontal distortion, not vertical. मतलब ये vertical distance edge AB 30 mm long. Each base edge has true length 30 mm. But यहाँ पे edge AB का true distance ही आ रहा है यहाँ पे 30 mm. So ये true length है. So we can measure that 60 degrees angle with edge AB. Edge in HP हमें पता है, edge AB is in HP. So this edge AB must be at an angle 60 degrees. Okay.
लेकिन ये 60 डिग्रीज बाय रोटेटिंग दिस व्यू in anti-clockwise direction. Visualize anti-clockwise rotation that base moves away from XY line and apex moves towards XY line. This is how we can rotate it, but that will be mistake because it is mentioned that apex is towards the observer. Towards the observer means away from VP. So हमें clockwise direction में rotate करना है so that apex is away from observer and therefore base towards apex is towards observer and base closer to XY line. So how to continue that? First of all, we have visualized कि apex away from XY line आना चाहिए. Okay. लेकिन draw तो हम edge AB करेंगे ना पहले. Edge AB at an angle 60 degrees. So 60 degrees angle measure करने के लिए to measure that 60 degrees angle with XY line मतलब with a horizontal line हमने एक faint horizontal line draw की है. एक point mark किया जहां पर मैंने 60 डिग्रीज यहाँ पे इस ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के 60 डिग्रीज मेजर किया. ये कहीं भी मार्क कर सकते हैं. सिर्फ एक केयर आपको करना है कि ड्रॉ मार्क इट सफिशिएंटली अवे फ्रॉम XY लाइन सो दैट व्हेन दिस डायग्राम इन टिल्टेड पोजीशन विल गेट कंप्लीटेड हियर इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग XY लाइन. टेक केयर ऑफ दैट. ये लाइन इफ यू ड्रॉ दिस लाइन वेरी क्लोज टू XY लाइन then final diagram will intersect XY line and that is missing. Okay, so ये dotted line AB मैंने यहाँ पे ड्रॉ की. चेक किया 60 डिग्री रोटेशन के बाद क्या पोजीशन होगी आप चेक कर लेना. ये है. So now edge AB makes 60 degrees and since it is true length ये 30 मिलीमीटर लेंथ ही है. यही लेंथ कंपास में लेके हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया. So true length gives true inclination. So A and B हमें मिल गया. अब आगे will take help of symmetry. अब देखो कैसे वही प्रोसीजर जो हमेशा हम फॉलो करते हैं. ये लाइन ड्रॉ की. ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एज AB because this is actually axis of symmetry which is perpendicular bisector of AB. AB vertical है in this diagram. तो OD horizontal है मतलब OD is perpendicular bisector of AB. सो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन आपको पता है क्या है वो ड्रॉ कर लेना. अदरवाइज आपको ये 30 मिलीमीटर लॉन्ग है तो 15 मिलीमीटर पे मिड पॉइंट मार्क कर लेना एंड प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्रीज मेजर करो एंड दिस लाइन ड्रॉ करो. देयर आर टू वेज. एक वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ना परपेंडिकुलर का मतलब ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लेंथ कंपास में लेके दोनों साइड पे इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करोगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा. दूसरी मेथड क्या? मिड पॉइंट बाइसेक्टर है ना तो मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर है तो एट मिड पॉइंट 90 डिग्रीज की लाइन ड्रॉ करो. यूज प्रोट्रैक्टर फॉर दैट पर्पस. ओके, सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ओडी. ये ओडी लाइन ड्रॉ की है. ऑफ कोर्स एग्जैक्ट पॉइंट O एंड D मार्क करना. अब देखो ये AB से O का डिस्टेंस कंपास में लिया और यहां पे ट्रांसफर कर लिया. कंपास से ट्रांसफर किया सो ये O मिल गया एंड देन AB से D का डिस्टेंस भी लेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं ये जो पॉइंट्स है जहां पे AB या CE लाइन जो है फेंट लाइन है देखो CE दैट इंटरसेक्ट्स ये और D ये पॉइंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैंने ये पॉइंट ट्रांसफर कर लिया. अब D पॉइंट ट्रांसफर कर रहा है. सिर्फ यहां से डिस्टेंसेस लेके ये ट्रांसफर कर रहा है. ये D पॉइंट है. सो OD A पॉइंट B पॉइंट D पॉइंट भी मिल गया. अब C एंड E के लिए दिस लाइन चेक हियर दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू OD. सो यहां पे ड्रॉ कर लिया हमने. अभी ऐसे लाइन कैसे ड्रॉ करना है आपको ऑलरेडी समझा है. यूज प्रोट्रैक्टर एंड थ्रू दिस पॉइंट ड्रॉ दैट लाइन. देन टेक दिस डिस्टेंस. वॉच वो दिस वर्टिकल डिस्टेंस कंपास में लिया और यहां पे ट्रांसफर कर लिया and on the other side immediately same distance and this is how and check read the labels. गलती से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे C लेबल कर दे और यहाँ पे E लेबल कर दे. ऐसे मत करना. इन प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पे किस ऑर्डर में A B C D है. इफ यू रीड A B C D E एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में पढ़ रहे हो ना आप लोग A B C D E तो यहाँ पे जब लेबलिंग करोगे A B C D E when you will read these labels एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही आने चाहिए.
So this is how ये बेस पेंटागन है. अब यहाँ पे हिडन विजिबल सोचना नहीं है, बिकॉज इट इज द सेम डायग्राम यू आर ड्रॉइंग हियर. मतलब सेम इन द सेंस आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज किया, इसलिए तो मैं इसे कहता हूं रोटेट द व्यू. हमने इसे रोटेट किया, ऐसे इमेजिन एंड ड्रॉ ऑल द एजेस. जैसे यहां पर है, देखो ओबी हिडन है तो इधर भी ओबी हिडन आएगी. ओडी विजिबल है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सोचना नहीं है आपको. जब आपने ये पहली लाइन ड्रॉ की थी ना ए बी, वो सबसे इंपॉर्टेंट था. व्हेन यू ड्रू लाइन ए बी इन दिस ओरिएंटेशन, उसी वक्त आपका अपेक्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर भी आ गया है समझो. तो वेरी फर्स्ट लाइन यू ड्रॉ, दैट्स इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ टू कंप्लीट द व्यू ऑन द अपोजिट साइड. तो उसके लिए हाउ टू क्या, वो तो वही प्रोसीजर है. देखो फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ड्रॉ वर्टिकल प्रोजेक्टर्स. ओके, नाउ फ्रॉम ओ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फ्रॉम डी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सेम लाइन होगी बिकॉज ओडी आपने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया ना, पैरेलल टू एक्स वाला लाइन. एज ओडी पैरेलल टू एक्स वाला लाइन. ओके, फ्रॉम सी डैश एंड ई डैश, दिस इज फॉर सेंटर ऑफ बेस. अब मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं. देखो वर्टिकल लाइन थ्रू ओ, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट्स. हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ, वर्टिकल लाइन थ्रू ओ, यहां पे ओ डैश मिल गया. देखो ए से, वॉच हियर, इट इज प्रोजेक्टर फ्रॉम ए, ऑन द सेम प्रोजेक्टर ए डैश इज, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए डैश, सो यहाँ पे ए डैश है. बी डैश, बी से वर्टिकल लाइन, बी से हॉरिजॉन्टल लाइन, बी डैश. देन फ्रॉम सी वर्टिकल लाइन, फ्रॉम सी हॉरिजॉन्टल लाइन, सी डैश. फ्रॉम डी वर्टिकल लाइन, फ्रॉम डी हॉरिजॉन्टल लाइन, सो यहाँ पे डी डैश है. एंड ई डैश फ्रॉम ई वर्टिकल लाइन. ओके, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये फ्रॉम ई ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ई डैश आ गया. दिस वर्टिकल लाइन इज फ्रॉम ई डैश. सो दिस इज हाउ ऑल 5 बेस कॉर्नर्स आर प्रेजेंट हियर एंड इट्स अपेक्स. नाउ देखो ये पेंटागन, फेंट लाइन से पहले पेंटागन आइडेंटिफाई कर लेना. नाउ जॉइन ऑल बेस कॉर्नर्स, देन जॉइन बाउंड्री एजेस डार्क. यही वही प्रोसीजर है, नथिंग न्यू हियर. बेस पेंटागन पहले आइडेंटिफाई कर लेना, जॉइन ऑल बेस कॉर्नर्स विद अपेक्स. एंड नाउ आफ्टर मेकिंग दिस बाउंड्री डार्क, आपको रिमेनिंग एजेस के बारे में सोचना है. लेकिन सोचना क्या है उसमें, जस्ट अपोजिट साइड पे देखना. ये फ्रंट व्यू कंप्लीट कर रहा है तो यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है फ्रंट, सो अपेक्स इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दैट मीन्स बेस हिडन है. अपेक्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो बेस हिडन है. सो ड्रॉ रिमेनिंग बेस एजेस हिडन, एंड फेस एजेस ओवर हिडन बेस आर विजिबल. तो देखो ये फेस, दो फेस एजेस मैंने विजिबल ड्रॉ किए और थर्ड एज वो हिडन ड्रॉ. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द ड्रॉइंग. नाउ एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये लिसन, ये एक्सिस का सेंटर किधर मार्क किया, यहाँ पे है. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, और इधर से वर्टिकल लाइन और ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन. ये एक्सिस, जैसे बाकी सब पॉइंट्स ट्रांसफर किए हैं वैसे ये भी पॉइंट ट्रांसफर किया, और ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किया. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस ड्रॉइंग. चेक ऑल डिटेल्स आर देयर इन द फाइनल ड्रॉइंग. अब पहले 4 डायग्राम जो है, दैट इज फर्स्ट 2 स्टेजेस आपने नहीं देखा, फिर भी पोजीशन के सब डिटेल्स है यहाँ पे. देखो क्या लिखा है, अब बेस एज इन एचपी. देखो एज ए बी एक्स वाई लाइन पे दिख रहे हैं फ्रंट व्यू में, मतलब दिस बेस एज इन एचपी. फेस एज अपोजिट टू द बेस एज इज पैरेलल टू एचपी, सो दिस फेस एज ओडी which is opposite to AB is a parallel to XY line in front view. Front view parallel means parallel to HP. And base edge in HP, which base edge is in HP? AB. Check here, it is at an angle 60 degrees. ये हमने 60 degrees पे ड्रॉ किया था. And apex towards observer, ये भी लिखा है, तो apex ये towards observer है.